Hi guys, so I'm here Megha again and I'm here with a video in which I'm going to show you how to do a 3-step facial routine at your home using your home based products. And if you're having a very acne wali skin and you're having some problems, then do firstly check with your dermat that you should do it or not. Okay, if you're having, I would suggest please don't do this. If your skin is okay and you have 1-2 pimples and थोड़ी बहुत चीज़ें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, then you can do this. Okay, so without further ado, let's get started. So right now I've tied my hair and I've washed my face with a face wash. After that, what are we going to do is we are going to mix milk, कच्चा दूध with a pinch of turmeric, जो कि मैं भी डालने वाली हूँ इतना सा. I think you can see. हाँ, तो मैंने लिया है कस्तूरी मंजल और वाइट टर्मरिक, सफ़ेद हल्दी, जंगली हल्दी वी कॉल इट. ओके, सो आप वो वाली हल्दी येलो वाली भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो थोड़ा ज़्यादा कलरेशन येलो दे देगा. सो जितना मैंने इतना लिया है, आपको उससे भी हाफ लेना है, ठीक है. एंड आफ्टर दैट, आफ्टर मिक्सिंग इट, वी आर गोइंग टू अप्लाई इट. वेट. So we're having this cotton and we'll dip this cotton into this bowl and then let it absorb and just pour the excess, and we are going to apply it like this. Don't apply it under your eyes, just apply it all over your skin, like all your cheek skin and everywhere. So yeah, applying it on your forehead, on your nose, and it will spill. Don't be bothered about that. Okay, so you can also apply it on your neck. Okay, so you can see it now. Applied it on my neck. So let it sit there on your face for 1-2 minutes. Like I'll let it sit for 2 minutes, and after that we're going to wash our face. So now I have washed my face with water, and now I'm going to tap my skin like this, so that all the minerals are going to seep into my skin. And now we are going to make a scrub with the help of rice flour and aloe vera gel. Aloe vera gel could be of any company, कोई भी कंपनी का ले लो, and we're going to mix it and our scrub is ready then. Okay, so अब मैं दिखाती हूँ कैसे I'm going to make my scrub. Okay, so before making scrub, I would like to say कि जिन लोगों को pimples हो रहे हैं वो लोग वहाँ उस एरिया में scrub प्लीज़ ना करें, एंड जिसकी जहाँ से सेंसिटिव स्किन है प्लीज़ वहाँ पर स्क्रब ना करो, और जिसकी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है प्लीज़ अवॉइड स्क्रब. ठीक है, मैं जो मास्क बनाऊंगी उसमें हमारी स्क्रबिंग भी होगी प्लस वो मास्क भी बनेगा, लाइक फेशियल मास्क भी होगा प्लस स्क्रब भी हो जाएगा उसमें. सो डोंट वरी. ओके, सो आई हैव दिस एलोवेरा जेल एंड दिस राइस फ्लोर. बहुत ही कम थोड़ा सा मैंने लिया है क्योंकि मेरी स्किन भी काफ़ी सेंसिटिव है. सो मैंने एक बार डाला एंड थोड़ा सा इतना, ठीक है. यू कैन चेक द कंसिस्टेंसी इन योर ओन वेज. एंड नाउ वी आर गोइंग टू मिक्स इट with the help of a spoon. It is ready. So कुछ इस टाइप की कंसिस्टेंसी हमको चाहिएगी, ऐसी, ठीक है, ऐसे. Okay, so what I'm going to do is applying it from here on my nose because I have lots of blackheads and whiteheads. ऑन माई चीक्स. बहुत आराम से, बहुत सर्कुलर मोशंस में आपने करना है, बहुत जेंटली स्क्रब करना है. सो अप्लाइंग इट ऑन हियर एंड ऐसे जेंटली मसाज करनी है सर्कुलर मोशंस में, बहुत हल्के हाथों से, बिकॉज इट्स योर स्किन आफ्टर ऑल. एंड यहाँ पर थोड़ा सा, and here on your foreheads. थोड़ा सा स्पेल होगा यार, don't be bothered. Scrubbing it for 1 minute, and after that
let it sit for 1 minute, and then we are going to wash our face. Okay, so I'm going to scrub it for 1 minute. On our nose, like why? So you can take a closer view. My skin feels very clean अभी भी, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रही है मुझको भी. So yeah, I'm having a very nice feeling. Okay, so now what are we going to do is we are going to make our mask. Okay, so पहले हम लोगों ने लेना है राइस फ्लोर, ठीक है, एंड आफ्टर दैट 1 टीस्पून राइस फ्लोर लेना है. उसके बाद हमें बेसन लेना है. मैंने बेसन ले लिया. ओके, सो बेसन, राइस फ्लोर, एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू ऐड सम टर्मरिक इनटू इट, 1 पिंच टर्मरिक, एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड इन सम मिल्क. ओके, सो 2 टीस्पून मिल्क ऐड करना है. और उसके बाद आपको जो कंसिस्टेंसी होगी वो थोड़ी इस तरीके से दिखेगी, इस टाइप की होगी. ओके, इस टाइप की कंसिस्टेंसी होगी, थोड़ी फ्लोई, बट स्टिल देयर इज सम थिकनेस. सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. और अब मैं लगाने वाली हूँ ये मास्क. आई डोंट नो, मुझसे हाथ से ज़्यादा अच्छे से लगता है, कुछ लोगों से ब्रश से अच्छे से लगता है. यू कैन यूज़ ब्रश इफ़ यू हैव. ओके, हाँ, इसमें मैंने राइस फ्लोर भी डाला था. तो राइस फ्लोर डालने से क्या होगा, जो लोग सेंसिटिव स्किन वाले थे बहुत ज़्यादा, उनकी स्क्रबिंग हो जाएगी. ठीक है, तो लेट्स जस्ट अप्लाई इट ऑल ओवर माय फेस. ओके, मेरे लिप्स पर लगेगा नहीं. हाँ, जितने हम लोग ये मास्क लगाएंगे ना, हम लोग उतने में लिप्स की स्क्रबिंग भी करेंगे. सो मेरे पास अभी जूसी केमिस्ट्री का लिप स्क्रब है, एंड उसको मैं अप्लाई करने वाली हूँ, एंड इट्स वेरी नाइस लिप स्क्रब. ठीक है, यू कैन ऑल्सो मेक अ लिप स्क्रब ऑफ योर ओन बाय मिक्सिंग हनी एंड ब्राउन शुगर पाउडर. सो ब्राउन शुगर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं आप. और उसके बाद आपको लाइक 1-2 मिनट के लिए अपने लिप्स को जेंटली स्क्रब करना है. ओके, एंड देन वी आर डन विद दैट ऑल्सो. तो अभी मेरी ये हो गया है काम. आई विल वॉश माई हैंड्स एंड देन वी आर गोइंग टू स्क्रब आवर लिप्स. सो हे गाइज, आई हैव अप्लाइड मास्क, सो आई वाजंट एबल टू स्पीक. सो अब जो भी कुछ होगा वॉइस ओवर में होगा. मैंने ये जूसी केमिस्ट्री का लिप स्क्रब लिया है, और इसके बहुत ही छोटे छोटे से फाइन से शुगर ग्रैन्यूल्स अभी मैं आपको दिखा रही हूँ. बहुत फाइन से इसमें शुगर ग्रैन्यूल्स का यूज़ करा है फॉर स्क्रबिंग. एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ऑल ओवर माई लिप्स एंड गोइंग टू रब इट इन द सर्कुलर मोशंस वेरी जेंटली. And you can also do this with honey and brown sugar powder. After applying it, wipe it off, and then you can apply a layer of Vaseline or any kind of a lip balm you have, any brand you have. So let's just do it. After washing my face, I'm going to apply this rose water, and we are going to dab it. All over our skin. Now what are we going to do is we are going to take aloe vera gel, nahi, sorry, aloe vera, and then that is my aloe vera, this one, and then I'm going to split it. So as you can see, my dog Denver is here now. So yeah, so now we are going to split this aloe vera, and we are going to make those cuts जो हम लोगों ने पिछली वाले वीडियो में बनाए थे. If you haven't seen that video for hair, please do see it. You will start notice some good changes in your hair. Okay, so this gel starts oozing out, right? You can see this. So we are going to apply it like this. It is going to moisturize our skin.
see if natural aloe vera gel doesn't suit you na, you can use कोई सा भी अपने घर वाला जो भी है, जो मम्मा लेकर आती है आपकी, या आपके पास जो भी एलो वेरा जेल है घर पर, आप उसको बाहर वाला किसी भी ब्रांड वाले को यूज़ कर सकते हो, बट मेरे को ये वाला सबसे ज़्यादा सूट करता है। और हम करने वाले हैं ऐसे ऐसे मसाज। मेन स्टेप ही मसाज का पता है। ओके, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज नाउ जस्ट गोइंग टू massage in circular motions all over our neck, our cheeks, our nose, and everywhere. Firstly, we'll go in circular motions, then like this. Okay, do this. These are your tongs. Okay, yes, the excess of aloe vera gel will go outwards. इससे स्किन टाइटनिंग भी होगी, ब्राइटन अप भी होगी। So now we are going to dab it. Yes. After this, I am going to apply this facial oil by Deve Herbs, pure rosehip seed oil, which is a cold pressed oil. This one. Okay, you can also buy this. And I got it from Megha, and you can do like oil massage after this. So I have taken this much. Okay, उन्हीं स्टेप्स को हम लोगों को वापस से दोहराना है। अगर आपके पास ऑयल नहीं है तो आप कोई भी लोशन ले लो, ठीक है, और उसको लगाओ 1 मिनट। या you can see the shine. Oh my god, yeah. So we are going to do this again 3 times here. So we're going to do this 3 steps here, 3 steps here. Thus we are done. Let's just pat it all over your skin. You can see it shining. It's shining. It's shining. Okay, so under your eyes बहुत carefully ऐसे ऐसे करके लगाना है, ठीक है। आईलिड्स के ऊपर भी, यहाँ पर भी ऐसे ही। ऐसे आईब्रोज को थोड़ा सा टाइटन सा करने के लिए sort of massage. You can massage for 10 minutes, you can massage for 5 minutes. आपकी श्रद्धा, जितना पसंद है उतना करो, बट 5-10 मिनट से ज़्यादा भी नहीं। Okay, so after done with the massage, we are done with this. So please let me know in the comment section कैसा आप लोगों को लगा ये रूटीन करने के बाद, and what are the changes you have seen. I would suggest you कि आप 2 weeks के बाद करते रहो इस चीज़ को, and you will definitely see some good changes. Like your skin will feel very soft, very soft plus very ज़्यादा बहुत ज़्यादा वेरी ज़्यादा ओके, सो बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा टाइटेंड सी फील होगी, बहुत ज़्यादा टाइटेंड अच्छी सी, ठीक है। सो
आई वोंट से कि बहुत ज़्यादा ग्लो मतलब वैसा आ जाएगा कि आप बहुत कोई किसी का डार्क शेड है तो वो लाइट हो जाएगा, किसी का लाइट है तो सुपर लाइट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. बट येस, आपकी स्किन पर एक अलग सा ग्लो आएगा, एक अलग सी शीन आएगा विच विल मेक यू फॉल इन लव विद दिस. So please let me know in the comment section. Bye bye. Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to my channel and hit the bell icon. Bye bye.